आज हम बात करने जा रहे हैं हेड इंजरी के बारे में। हेड इंजरी एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग सिर पर, विशेष रूप से ब्रेन पर किसी भी आघात का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सिर की चोट से तात्पर्य सिर पर आघात से है। इसमें ब्रेन इंजरी शामिल हो भी सकती है और नहीं भी। हेड इंजरी की डेफिनेशन है: हेड इंजरी इंक्लूड्स एनी ट्रॉमा टू द स्कैल्प, स्कल और ब्रेन टिश्यूज ईदर सिंगली और कलेक्टिवली। सिर में चोट लगने के कारण जान लेते हैं। इसके कारण है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, ब्लंट हेड ट्रॉमा, डायरेक्ट ब्लो, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, assaults, falls by recreational activities such as biking, skating, or skateboarding, sports injuries, violence and abuse. Mechanisms of trauma of head के बारे में जान लेते हैं। Deformation. Deformation results from the transmission of energy to the skull, which is insufficient for the skull, then becomes deformed or fractured. Acceleration, deceleration. Acceleration-deceleration injuries typically occur when the acceleration of skull moving in a motor vehicle suddenly decelerates, when it hits an immobile object such as the steering wheel or windshield. Rotational forces. Rotational forces also distort the brain and can cause tension, stretching and diffuse shearing of brain tissues. Often the forces of acceleration, deceleration and rotation occur together, affecting both the brain and spinal cord. Head injury में कूप इंजरी किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रभाव के स्थल के नीचे होती है और कॉन्ट्राकप इंजरी उस क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है जिस पर हमला किया गया था। कूप और कॉन्ट्रिकूप इंजरी सेरिब्रल संबंधी इंजरी से जुड़ी होती है। कूप और कॉन्ट्राकप इंजरी व्यक्तिगत रूप से या एक साथ हो सकती है। जब कोई चलती हुई वस्तु स्थिर सिर से टकराती है तो कूप इंजरी सामान्य होती है, जबकि जब चलती हुई वस्तु किसी स्थिर वस्तु से टकराती है तो कॉन्ट्राकप इंजरी उत्पन्न होती है। अब टाइप्स ऑफ हेड इंजरी के बारे में जान लेते हैं। जब स्कल फ्रैक्चर्ड तो कहा जाता है कि मरीज के सिर पर ओपन हेड इंजरी लगी है। यदि स्कल बरकरार है तो क्लोज हेड इंजरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। हेड इंजरी के प्रकारों में स्कैल्प और स्कल तथा ब्रेन की इंजरी शामिल है। हेड इंजरी क्लोज या ओपन हो सकती है। क्लोज हेड इंजरी वह होती है जिसमें स्कल नहीं टूटी होती है। पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी तब लगती है जब कोई वस्तु खोपड़ी को छेदती है और ड्यूरामेटर को तोड़ देती है। ब्रेन इंजरी फैल सकती हैं, एक विस्तृत क्षेत्र में हो सकती हैं या एक छोटे, विशिष्ट क्षेत्र में स्थित हो सकती हैं। स्कल इंजरी। हेड इंजरी से मामूली सिरदर्द स्कल फ्रैक्चर हो सकता है जो ब्रेन इंजरी से जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी। कुछ रोगियों में लिनियर या डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर हो सकता है। स्कल फ्रैक्चर। स्कल का फ्रैक्चर ब्रेन के आसपास की बोन और स्कल के भीतर अन्य संरचनाओं का टूटना है। स्कल फ्रैक्चर के टाइप्स है: अ लिनियर स्कल फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर्स, बैसिलर स्कल फ्रैक्चर, सिंपल स्कल फ्रैक्चर, कम्युन्यूटेड स्कल फ्रैक्चर, कंपाउंड स्कल फ्रैक्चर। अब ब्रेन इंजरी के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्रेनियम और इंट्राक्रैनियल कंटेंट पर लगाए गए एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स का परिणाम है जिससे टेम्पररी या परमानेंट हानि, फंक्शनल डिसेबिलिटी या साइकोसोशियल मैलएडजस्टमेंट होता है। कंकशन। कंकशन सीक्वेल से जुड़े हुए हैं। यदि चेतना का नुकसान होता है तो यह 5 मिनट या उससे कम समय के लिए होता है। कंकशन की विशेषता हेडेक, डिज़नेस आना या नोसिया और वॉमिटिंग है। रोगी को आघात से पहले या बाद की घटनाओं में भूलने की बीमारी की शिकायत हो सकती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में स्कल या ड्यूरा की कोई चोट नहीं है और सीटी या एमआरआई पर कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं पाई जाती। कंट्यूजन के बारे में जान लेते हैं। कंट्यूजन। Brain contusions are bruises of the brain tissue that occur as a result of brain trauma. In some cases, brain contusions lead to hemorrhages which are absorbed into the brain tissue. If blood is absorbed into the cerebrospinal fluid, it can cause permanent neurological damage. The majority of contusions occur in the frontal and temporal lobes. Brain contusions are localized, a characteristic that distinguishes them from concussions, which are more diffuse, spread out. The patient is unconscious for a considerable period. Diffuse axonal injury.
Diffuse axonal injury is characterized by extensive, generalized damage to the white matter of the brain. Axons are stretched and damaged when parts of the brain of differing density slide over one another. It can be seen in mild, moderate or severe head trauma and results in axonal swelling and disconnections. As with other closed head injuries, diffuse axonal injury may cause brain swelling and intracranial pressure. Intracranial hemorrhage. Intracranial describes any bleeding within the skull. Bleeding in the skull may or may not be associated with a skull fracture. Intracranial hematoma. Collection of blood occurs when the brain is forced against the inside of the skull, resulting in a pool of blood outside the blood vessels of the brain or in between the skull and brain, cranial vault. There are 3 types of intracranial hematoma: subdural, epidural and intraparenchymal. चलिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में जान लेते हैं. Disturbances in consciousness. Confusion to coma. Increased intracranial pressure. Headache. Vertigo and disorientation agitation. Restlessness and dizziness. Nausea and vomiting. Pupillary abnormalities. Respiratory changes. Changes in vital signs: tachycardia, tachypnea. Altered or absent cough and gag reflex. Sensory, visual and hearing impairment. Hemiparesis or hemiplegia. Personality change. Impaired mental function. Difficulty concentrating. Increased mood swings. Lethargy or aggression. Altered sleep habits. Ataxia. Raccoon eyes, periorbital ecchymosis. Battle sign, bruises in mastoid region. CSF otorrhea, CSF rhinorrhea. चलो हेड इंजरी का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करें, इसके बारे में जान लेते हैं. History and physical examination. CT scan and MRI. X-ray of skull and cervical spine. Positron emission tomography. Angiography. Neuropsychological tests. Clinical approach of a patient with head injury. 1. Detailed history of injury has to be taken and also the process of deterioration rapid or gradual. 2. History of alcohol intake. Alcohol intake mimics head injury and alcoholism itself may mask the features of head injury. 3. Neurological assessment by level of consciousness Glasgow Coma Scale, GCS. Pupillary reaction to light and size. Pulse. Temperature. Blood pressure. Respiratory rate. Reflexes, limb movements, normal, mild, severe, weakness, spastic flexion. Extension, no response. 4. Status and protection of airway. 5. General assessment and other injuries like fractures, abdominal organ injuries and thoracic injuries are looked for. 6. Presence of any scalp hematoma, fractures of skull bone, which may be depressed, has to be looked for. 7. Any blood from nose or ear, CSF rhinorrhea or CSF otorrhea has to be looked for. चलो हेड इंजरी के मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं. Treatment varies widely depending on the type and severity of injuries. Minor head injuries are often treated at home as long as someone is available to watch the person. Medications commonly are used in the acute setting to control early seizures, reduce intracranial pressure, and correct electrolyte abnormalities. Brain-injured patients may be partially or completely dependent for maintenance of respiration, nutrition, elimination, movement, and skin integrity. 1. Management of increased intracranial pressure. Maintaining adequate oxygenation. Hyperventilation. Administering mannitol, osmotic diuretics. Drainage of cerebrospinal fluid. Elevation of the head of the bed. Complete bed rest. Administering high-dose barbiturate therapy. Dopamine to maintain cerebral perfusion pressure above 50 mmHg. Glucocorticoid, dexamethasone, decadron, to reduce cerebral edema. 2. Antibiotic therapy. Administration of antibiotics is required to prevent infection with open skull fractures and penetrating wound. Antibiotics are usually not required in closed head injuries.
Teen antiepileptic therapy. Medication to prevent seizures may be given to prevent or treat seizures that occur from the head injury. Seizures cause a profound elevation in intracranial pressure. Phenytoin is most often used to control seizures. CHAR supportive measures. Ventilator support. Vasopressors may be required to maintain blood pressure. Seizures prevention. Fluid and electrolyte maintenance. Nutritional support. Pain and anxiety management. PANCH surgical management. Evacuation of blood clots. Debridement. Elevation of depressed fractures of the skull. Suturing of severe scalp lacerations. Decompressive craniotomies. Craniotomy. अब नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में जान लेते हैं. Assist neurologic and respiratory status to monitor for sign of increased ICP and respiratory distress. Monitor and record vital sign and intake and output, hemodynamic variables, ICP, cerebral perfusion pressure, specific gravity, laboratory studies, and pulse oximetry to detect early sign of compromise. Observe for sign of increasing ICP to avoid treatment delay and prevent neurologic compromise. Assess for CSF leak as evidenced by otorrhea or rhinorrhea. CSF leak could leave the patient at risk for infection. Assess for pain. Pain may cause anxiety and increase ICP. Check cough and gag reflex to prevent aspiration. Check for sign of diabetes insipidus, low urine specific gravity, high urine output, to maintain hydration. Administer IV fluids to maintain hydration. Administer oxygen to maintain position and patency of endotracheal tube if patient and to lower ICP. Provide suctioning, if patient is able, assist with turning, cuffing, and deep breathing to prevent pooling of secretions. Maintain position, patency and low suction of NGT to prevent vomiting. Maintain seizure precautions to maintain patient safety. To protect the patient from self-injury and dislodging of body tubes, use padded side rails or wrap the patient's hands in mitts. Avoid restraints because straining against them can increase ICP. Minimize environmental stimuli by keeping the room quiet, limiting visitors, and speaking calmly. Administering high-dose barbiturate therapy. Dopamine to maintain cerebral perfusion pressure above 50 mmHg. Glucocorticoid, dexamethasone, decadron, to reduce cerebral edema. Encourage the patient to express feeling about changes in body image to allay anxiety. Provide appropriate sensory input and stimuli with frequent reorientations to foster awareness of the environment. Provide means of communication, such as a communication board to prevent anxiety. Provide eye, skin, and mouth care to prevent tissue damage. Turn the patient every hours or maintain in a rotating bed if condition allows to prevent skin breakdown.